Okay, so a warm welcome to all of you over here. Today we are going to do a Warli painting, which is based on fishing in Warli tribe. And we have here with us Mr. Sanjay Sangle, who is based in the Raigarh. Yeah, so we have Mr. Sanjay Sangle, who is based out of Raigarh in Palghar. So he will be taking the session for Warli, the same picture which we have like shown in the display picture of the group. So संजय भाऊ, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे हम सबको? सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम है संजय सुभाष सांगले। मैं अभी लोधी तो गांव लोधली गांव में रहता हूँ। तालुका खालापुर, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, इधर में रहता हूँ। ये वारली पेंटिंग जो है मैं पिछले 22 साल से कर रहा हूँ और बहुत लोगों को मैंने सिखाया है। और उसमें से गवर्नमेंट के मैं क्लासेस लेता था। बीच में कैटलफ्लाई नितिन सर से मेरी मुलाकात हो गई और नितिन सर ने पिछले 2 सालों से, मतलब जब लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन चालू हुआ था, तब से मैं कैटरफ्लाई के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। और बहुत लोगों को सिखाया है। ये बहुत मेरे को खुशी लगती है कि कैटरफ्लाई की वजह से ये जो वारली है ये लोगों तक पहुंच रहा है। बहुत Thank you. बढ़िया संजय भाव. So Sanjay Bhau conducts daily sessions with us, and this is one of the complimentary sessions that we are taking, which is fishing in Warli tribe. Today, that is what we are going to do. We are working on an A4 size sheet, and we're going to start with the border of the painting, and we'll proceed. We'll just keep guiding you as to what you need to do as we go ahead. Okay? तो संजय भाव, हम शुरू करते हैं. I hope we are audible to everybody. Please put in the chat box because I think few people are not able to hear. संजय भाव, आप म्यूट पे हैं. म्यूट से हटा लीजिए. Okay, great. So we are getting the responses, and yes, those who are not able to hear us, please rejoin or check your internet connection. संजय भाव, आपको आवाज आ रही है मेरी? I think I'll just check with संजय भाव. संजय भाव, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें. आप म्यूट पे हैं. Just 1 second everyone. संजय भाव, अनम्यूट करके देखिए. हाँ, हो गया. अनम्यूट हो ही नहीं रहा था. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ये हमने सबको मेरा नमस्ते. अपन आज सेक्शन के लिए चालू करेंगे. देखो, ये जी. जो मैंने पेज लिया है वो ये ये 4 साइज का पेपर है ये. ओके, तो इसके ऊपर अपन को पेंटिंग निकालना है. तो निकालने से पहले अपन स्केल से 1/2 इंच, हाँ जी संजय भाव. हाँ, 1/2 इंच और वो उधर वो छोड़ के 1 इंच ऐसे बॉर्डर के लिए अपन 1/2 पॉइंट इंच करना है निकाल. संजय भाव या सेंटीमीटर्स में करना है? सॉरी, सेंटीमीटर. अच्छा, ओके. सो 1/2 सेंटीमीटर्स पहले छोड़ना है स्पेस, और उस 1/2 सेंटीमीटर स्पेस का जो पॉइंट है उससे 1 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ना है. और संजय भाव, अगर कोई व्हाइट पेपर यूज कर रहा हो तो उसको क्या करना है? उसको ब्राउन कलर से या फिर ब्लू कलर से आप कर सकते हैं. अच्छा, ओके, ब्राउन या ब्लू, ठीक है. ब्लैक नहीं. ब्लैक हम यूज नहीं करते हैं. ओके.
अगर आपके पास पेन व्हाइट पेन नहीं है एवरीवन, यू कैन यूज अ सिंपल पेंसिल टू डू योर मेजरमेंट्स, दैट इज ऑल्सो फाइन. आप पेंसिल से भी कर सकते हैं. इफ यू आर यूजिंग अ व्हाइट पेपर, you can you can paint your paper in brown color or any shade of brown, like a terracotta or any other color that you like a red, and you can just continue making it on that. If you are not ready with the coloring part of it, you can also continue making this with us on a rough piece of paper and then fair it up on your final piece. So the measurement is half centimeter from the border of your paper. So half centimeter first, and from that half centimeter mark, आपको 1 centimeter mark करना है, 1 centimeter from that half centimeter mark. So that मैम is your measurement for the border. मैम ब्रश से करने का या फिर पेन से करूं? संजय भाव ब्रश से ही करेंगे हम. ठीक है. अगर आपको बॉर्डर वाले में पेन यूज करना हो तो आप कर सकते नहीं हैं. नहीं, बॉर्डर वाले में भी मेरे ब्रश ही यूज करूंगा. हाँ, ब्रश ही करते हैं. So after you have marked the dots, you have to start making your border. As you can see, Sanjay Bhau is using a colored sheet. So he's going to start with a white paint, and he's using a thin brush to draw the border here. And you can see how he's drawing that. Okay, so use your scale and just keep it slightly at a distance from that dot so that you have a little bit of buffer to draw the line through that dot that you have marked. Once you get a rough straight line, if you want to kind of brighten it up, you can do it one more time over that line so that it brightens up. तो संजय भाव आप 0 नंबर का ब्रश यूज कर रहे हैं इसमें? हाँ जी, हाँ 0 नंबर. ओके. संजय भाव थोड़ा थोड़ा जब हम ये करते जाएंगे, उसके बीच बीच में आप वारली के बारे में और भी इंफॉर्मेशन सबको देते जाइएगा. सबको बहुत अच्छा लगेगा और चीजें पता करने में कि कैसे क्या होता है वारली आर्ट में. So borderline on which color? On white paper, you'll have to first color your white paper with some darker color and then use white on it. अगर आपको अभी संजय भाव के साथ साथ करना है, so you can use any alternate color that you like, but usually the design is done with white color on a colored paper. And Sanjay Bhau uses the traditional method, which uses white color only, not any other color. Okay, so that is why you need to have the background colored. So meanwhile, we are doing the border. You can also color your background with any dark color that you like a brown or a maroon or a red. And then you can start by making the border. And because the border will have a repeated pattern, you can slowly complete the border at your own pace. Okay, so that should not be a problem. Usually when we do our sessions, we start with coloring our canvas in that specific color that is required, and then we go ahead with the design. But since this is a short session, we've started directly with the design on an already colored paper. So that's the difference. But usually in our regular sessions, we start by making our base, followed by the design that we will make. If you have any questions, I can see some people raising their hands. If you have any questions, please put it in the chat box. I'll answer those questions for you. Not clear of the border dots. So your from the edge of your paper, आपको half centimeter measure करना. You have to measure half centimeter first from the edge of your paper. And then from that half centimeter mark that you have made,
you have to measure another 1 centimeter. So you'll get 2 dots there. Okay, that's how we have measured. I hope that is clear now to you, Jhalak. You understood, but not how far would that be from other edge? Would you like to rephrase your question, because I'm not understanding what you have not understood really. संजय भाऊ पेपर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए तो आप जहाँ काम कर रहे हैं वो दिखाई देगा. हाँ अब ठीक है. So your first line is first line is 0.5 centimeter away from the edge, and your second line is 1.5 centimeters away from the edge of the paper. So continue making the border. As you see, it's a repeated thing to do on all 4 sides. So if anyone is using colored white paper, you can just start by coloring it. You will have ample amount of time to start with, Sanjay Bhau. So initially, I just kind of cut off, and I was telling that Warli is a traditional form of art, which is mostly practiced by the people who are living in the North Sahyadri regions in the Maharashtra. Okay, and in most of the traditional art forms, we mostly do mythological characters. But in Warli, it focuses on the daily life of the Warli tribe. Okay. So Sanjay Bhau has been working with us since quite a long time now, and Catterfly basically, for those who are new and they don't know, Catterfly is an initiative to support the traditional artists from India. So we are working on a cause, and we are helping all the artists through these workshops to get a sustainable income. And we also want to promote Indian art forms, which are now rare these days. And that is how we are conducting daily workshops, so that these art forms still stay with us, and it also provides sustainable income to these artists. So I would really request all of you to go through our website, and in a short time, Nidhi will also be sharing the link for our website with all of you, and you can go through the workshops, upcoming workshops, and do join the workshops that you would like, so that you can support these artists. And these are wonderful workshops that we conduct with all the information regarding those workshops, the themes, and it's a more interactive session. So I would request everyone to go through the link that Nidhi will share with all of you, and do join the workshops that we are conducting. तो संजय भाऊ वारली में हम मोस्टली बॉर्डर से ही स्टार्ट करते हैं. हाँ, बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं. और कभी ऐसा होता है कि मतलब हम बिना बॉर्डर के वारली बनाएं? करते हैं ना. अच्छा, लेकिन मैं नहीं करता हूँ. अभी क्या, आप नहीं करते हैं, आप हमेशा बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं. बॉर्डर से स्टार्ट करता हूँ. मतलब आपकी सारी पेंटिंग्स में बॉर्डर हमेशा होती है. हाँ, हमेशा रहती है. ओके.
So continue with the border. So this is the method with which Sanjay Bhau would make the border, but it may be difficult for few of you to directly make it this way. So you can also first make your border with pencil and then go ahead making it with brush on top of it. Or you can also use a white pen if you're not comfortable with brush at this moment, um, so that you can make it properly. And then later on, you can also practice once you're aware of everything regarding this painting. You can recreate it with brush. Hi, Vipra, can you hear me? Yes, Nidhi, I can hear you now. Okay, I think I was just telling everybody like we work only with native artists, and as Yeah, Vipra was telling, it's an initiative to support these native artists who are trying hard for their daily survivals, and they are also trying to update and make this art reach to everybody who are interested in doing traditional art. So we do art forms in different art styles like Warli, Madhubani, Kerala mural, Patachitra, Kalighat, Pichwai, Mysore, and Gond art. So we have a proper calendar. We have made a proper calendar for the upcoming workshop, which I'll just share in a while. So we do it with all the native artists. that's great. And संजय भाव थोड़ा सा पेपर आप नीचे खींच लीजिएगा. So Vijay हाँ, अभी Suri इसको ji अपन wants to खड़े में, tell, बता रही हैं कि वो फैब्रिक पे भी वर्क करती हैं. That's very good. very nice, विजय जी. इनफैक्ट हम लोगों ने भी पास्ट में काफी सारी वर्कशॉप्स फैब्रिक पे की है, मधुबनी करी है, केरला म्यूरल भी करी है. सो इट रियली कम्स आउट वेरी वेल ऑन फैब्रिक एज वेल. संजय भाव आपका कैमरा ऑफ हो गया है. ओके ओके ओके। मेरे ख्याल से आपको फोन भी आड़ा करना होगा. हम्म। ऑफ है संजय भाव अभी भी. ओके, एक मिनट ना। हाँ. हाँ, अभी ठीक है संजय भाव. ठीक है, इसको अपन खड़े में करने वाले हैं। ओके, ठीक है. तो अपन बॉर्डर चालू करेंगे इसका। जी. देखो वारली देखा जाए तो उसमें ज्यादा आपको ज्योमेट्रिकल फिगर दिखेंगे, मतलब ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हाफ सर्कल, सर्कल, यही इससे बनता है वारली। हाँ, तो जी. बॉर्डर भी इसी तरह के रहते हैं। तो अपन इधर स्क्वायर वाला बॉर्डर निकालने वाले हैं। हाँ, जी. So, Jhalak, to let you know, initially, if you see the paper was looking little squarish and now it is looking little longer. I think it is the orientation of the camera and some issue with the video that has come, which is making the paper look longer at times and sometimes it is broader. So I was also wondering initially when the session started that the paper does not look like A4, but it's an A4 size sheet. We'll keep telling you about the proportions that you need to take so that you get it in the right proportion. So do not worry about that. But it is definitely an A4 size sheet
because I've confirmed it with Sanjay Bhau already. It's probably the camera orientation. I'm not sure why exactly it is showing that longer of an effect for the paper. So if you see, we are just working with lines on the border. So just continue with the lines, and we will be doing the design inside that. We might do a bit of the design on the border, and then whatever is left over, you can do it slowly because it is a repeated pattern, and we want to focus more on the design inside rather than doing more of the repeated work. Okay. So संजय भाऊ, आप व्हाइट एक्रेलिक पेंट यूज कर रहे हैं अभी पेंट करने के लिए? एक्रेलिक पेंट, हाँ. ओके. अदरवाइज कुछ और भी यूज करते हैं हम? ट्रेडिशनल जब वारली करते हैं एकदम, तो हम क्या यूज करते हैं इसमें व्हाइट पेंट की अपन जगह? टेराकोटा मट्टी का यूज करते हैं. अच्छा. हाँ, जिसमें टेराकोटा बैकग्राउंड मिट्टी जो बैकग्राउंड है उसके लिए? बैकग्राउंड के लिए, हाँ. अच्छा. बाकी व्हाइट कलर यही यूज करते हैं अपन. अच्छा. और वैसे राइस पेस्ट भी यूज होता है ना इसके लिए? होता है, लेकिन इसके लिए होता है यूज कभी कभी. अच्छा. इट्स नॉट हाफ इंच गैप. संजय भाऊ, अप्रोक्सीमेटली आप हर 1 स्क्वायर इंच के का बीच गैप में होगा. एक एक 1 सेंटीमीटर इंच का, का, हाँ, 1 सेंटीमीटर का. 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ रहे हैं. हाँ. So approximately 1 centimeter gap between each line that we are doing, Gracie ji. थोड़ा सा पेपर ऊपर खिसका लीजिए संजय बाबू. ओके. 1 centimeter square, मेरे को that's पता हो, right. जी जी आप संजय मेरे बाबू, को आपको. पता हो, हाँ. हाँ हाँ, क्योंकि मैं मैं बताते करते जाऊँ. जाता हूँ तो पता नहीं चलेगा. जी. So continue with the lines at 1 centimeter gap each. You don't need to measure each and every line that you're making. You can just see the approximate measurement initially, and then just go ahead leaving that much space approximately and make your lines. So Vipra, as we can see, this is a repeat work of making the lines. I would like Yes. to showcase the Warli workshops first of all, because we are doing Yeah. the Warli theme as of Warli workshop we are doing. So Sure. I will just निधि, you went on mute, and meanwhile संजय भाऊ, आप जब ये lines बना लेंगे तो आप इसके बाद में डिजाइन बनाना स्टार्ट मत कीजिएगा उस समय. ठीक है, रुकना है ना. थोड़ा सा ऊपर खिसका लीजिए. हाँ. निधि, आर यू एबल टू हियर मी? I think Nidhi just cut off, but she'll be back with us, so not to worry. Meanwhile, संजय भाऊ, आप कंटिन्यू करते रहिए. जब मैं आपको रुकने बोलूंगी तब रुक जाइएगा. So I hope all of you have understood what we have done. We have made 1 centimeter space between these lines, and we are just making simply lines inside the border that we prepared. Don't add too much water in your white paint. You need to keep the consistency somewhere in between so that the white paint doesn't get dull when you put it on your paper.
ठीक है संजय भाऊ, हम अभी डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं। निधि शायद उसका नेटवर्क इशू है कुछ, तो वो वापस आएंगे, हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं तब तक। ठीक है। So you can see that we are simply making lines in it, and lines से हम alternate positions में opposite direction में V shape जैसा बना रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो. So you just need to work with lines, and we're making 4 lines in each box. Okay. If you want to take a closer look at any time, you just let us know. We'll lift up the paper to show you the a closer view of the picture. So you have to continue doing this in the boxes. So संजय भाऊ, आप कंटिन्यू करते रहिए, और आप इसमें बॉर्डर पे करते रहिएगा. अभी निधि इज बैक, सो निधि, डू यू वांट टू टेक ओवर? संजय भाऊ, थोड़ा सा पेपर उठा के पास से दिखा दीजिएगा. Just have a look. That's the border. Okay. All right. ठीक है. Nidhi, just give me a second. Okay, thank you, Vipra. I think I was cut off due to bad network. Am I No audible now? problem. Yes, yes, you are. Okay, so I was because we are doing a repeat work and similar things will be done around the border. So I would just quickly take you through the Warli workshops which we have planned. I don't know if you could see any of those. So I will just start from the starting. Okay, so Vipra, I'm audible, right? Yes, yes, you are. Okay, so as you could see, the picture is just loading. So the first in the line is Gauri Dance Ganesh Chaturthi Special. Nidhi, we can't see the screen yet. Okay. Yeah. Is it fine now? No, it's not visible, Nidhi. Okay, just give me 2 minutes. Meanwhile, let Sanjay Bhau continue. I'll just check. Sure. You can paint with brush, or you can just make it with pen also, if you're not comfortable with brush. संजय भाऊ, तब तक हाँ आप continue कीजिएगा, and we'll give you a closer look once Nidhi is done, everyone. So just bear with us. Yes, Nidhi, now that is visible. Okay. So the first workshop in the line is like Gauri Dance Ganesh Chaturthi Special. As you can see, it's a very intricate design. So we'll be taking up this for 2 weeks. It will start from 29th August and it will go up to 8th September. Now, Warli with Catterfly, the workshops are conducted Monday to Thursday, and it is 1 to 2 p.m. So likewise, it depends upon the themes. Some themes are 1 week, some themes are 2 weeks. So this is a very intricate design. So we are taking it up for 2 weeks. So you can, I hope you all can see. After this, we are doing this modern Warli Tarpa dance in Warli tribe. So this Tarpa dance is a very famous dance in Warli tribe. And so we are taking it up and we'll be making it on paper. It's a 1 week workshop.
We'll be doing it from 12 to 15 September. After this, we have this modern Warli city life. As you can see, daily activities of the city and how what all activities are conducted, what all things are there. So it's a 2 week workshop because again, you can see it's a very intricate design. After this, we will be doing this peacock in Warli. It's a beautiful peacock, as you all can see. So Sanjay Bhau will be teaching everyone how to make this, and it has some basic designs as well. So anyone who's looking to start with basic can join this workshop. It will be from 10 to 13th October, 1 week workshop, 1 to 2 p.m. After this, we have planned this Diwali celebration in Warli tribe. On the occasion of Diwali, we have planned this workshop. As you can see, Tarpa again in this picture, but in a different style, and different activities happening due to Diwali celebration. So this we will start in from 17th to 20th October, and again 1 to 2 p.m. So anybody who's interested can contact me. Then we are doing this marriage celebration in Warli tribe. As you see, that's a time period where marriages, mostly marriage happens. So keeping in mind, we are doing this marriage celebration in Warli tribe, 25th October to 3rd November. Then we are doing this tree of life. Tree of life is a very famous theme you can see across traditional art forms. So this is a beautiful tree which depicts many things which we will be telling about this in the workshops. So it's a 1 week workshop, 7 to 10th November. Then we are doing this dancing peacock with tree of life. It's another form of peacock only, and it's in a different posture and style. This is 1 week workshop. Sorry, this is a 2 week workshop, 14th to 24th November. And then this is Mercy of God, in which you can see like a lot of things happening. So a closer view and a closer representation of the image will be done in the class, and a more these are all very interactive sessions. So Sanjay Bhau and the moderators will be telling about this in a very detailed way. After this, we have this, I think that's it. So we have made the calendar till 8th of December, and similarly I will be showing you different art forms, what all is coming up in the different art forms. And as all of you know, mostly many people know, like we were running a offer lastly for Independence Day. So for exclusively for this group, we have extended that offer, and from 19th to 21st, all our workshops will be on 25% off on the published price. So if anyone registers for any of these workshops from 19 to 21st, can avail the 25% off on the published price, which is like you can see, like if it is for 600, so 25% off on this price. So I have just showcased Warli. Similarly, I will be in some time doing it for other art forms as well. So I will not take much time of yours. I think border is mostly complete, and we will talk later again. Thanks, So Nidhi. yeah, one So second. beautiful workshops coming up, everyone. Please do have a look at our website and join few of the workshops. संजय भाऊ, आपने जो ऊपर बॉर्डर बनाई है, उसमें जो आपने डॉट्स डाले हैं, वो एक बार पास से दिखा दीजिएगा, क्योंकि वो दूर से इतने समझ में नहीं आ रहे हैं हमें. संजय भाऊ, एक मिनट. हाँ. So just have a look. You just have to place dots, like more like flowers, and in that empty space which is towards the top. Okay. संजय भाऊ, आपका कैमरा आड़ा हो गया, आपको शायद टर्न करना होगा, और आप म्यूट पे भी चले गए हैं. एक बार घुमाइए कैमरे को संजय भाऊ. हाँ, अभी ठीक है. ठीक है संजय भाऊ, थोड़ा ऊपर कर लीजिए. ओके.
सो हम इस साइड का काम करके संजय भाव अंदर काम करेंगे, क्योंकि बॉर्डर में रिपीटेड वर्क है, तो सब बॉर्डर समझ गए हैं तो कर सकते हैं अपने स्पीड के हिसाब से। After lines and borders, in the remaining space, we have added dots. So a center dot and some more dots around it, just like in the shape of a flower. We'll just give you a closer look again in a bit and you can have a look at it. I think Vipra, he can teach this flower on a separate paper if that's Yeah, okay. sure. संजय भाऊ, जो आपने ऊपर डॉट से फ्लावर बनाया उसको थोड़ा बड़े में एक बार दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखाएंगे ना। वो एक बार दिखा दीजिए, शायद उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। अभी अभी दिखाऊं? हाँ, दिखा दीजिए। थोड़ी देर बाद अभी दिखाएं। हाँ। एक क्या? So 1 to 2 is an odd timing. If that is the case with you, you of course we always provide the recording. So with our regular sessions, you are also given access to classroom where you can find every day's recording and pictures as well. So in case you miss the session, the pictures and the videos are available in classroom for you to access. There are different subscription plans according to which the duration of your access also varies. So you can get in touch with Nidhi for all the explanation regarding the access and all. She'll help you with all the information and then you can register for the sessions that you like. Okay. ओके। इसको हमने क्या किया है, खाली एक पॉइंट दिया है, जी। उसके बाजू में अपने 4 5 6 ये 6 पॉइंट दिया है। तो संजय हाँ, भाऊ, एक काम कर सकते हैं हम, एक स्क्वायर बना ठीक है के ना? ना, जैसा डिजाइन है पूरा बॉर्डर का, उसको थोड़ा पेन से हाँ आप बड़े ठीक में है, दिखा ठीक है, दीजिए। ठीक है। हम्म। ये हमने पहले लाइंस की थी और उसके बाद जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें हमने ये डॉट्स डाले थे। इस तरह से। Okay, so I hope that makes it clear to you, Jhalak. ठीक है संजय, वो अब समझ में आ गया है। So initially, Warli was done on walls. Now everyone has started doing it on canvas and paper. Initially, that was done on walls with a background of cow dung. So संजय भाव, पहले वार्ली वॉल्स पे करना शुरू हुआ था ना, उसके बाद अब हाँ, पेपर और कैनवस पे होने लगा है। वॉल्स पे पहले पेपर और कैनवस बहुत लेट चालू हो गया। हाँ पहले दीवार पे थे, पहले गुफा में बनाते थे। जी। तो आए कि क्या क्या है वो, क्या कैसे कैसे है, चित्र करते करते गुफा में हो गया। बाद में वो जो लकड़ी का दीवार आ गया,
जी मतलब लकड़ी के ऊपर गोबर का लेप देते थे जी और उसके ऊपर चावल के आटा जो रहता है, चावल का आटा, जी उससे पेंटिंग निकालते थे। जी। So, Kalpana ji, you can feel free to add what you want to say in the chat box. We will unmute everyone later on in tomorrow's session once we are able to see everyone's painting as well. But unfortunately, cannot unmute in between the session at the moment for smooth progression of the session. But we will definitely unmute you by the end of the session. Usually, our regular sessions are interactive, so you can always unmute and ask. But because of the high number of people, unfortunately, we're not unmuting anyone at this point. But please feel free to add your message in the group and we'll have a look at it. संजय बाबू, अब हम आगे बढ़ते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। सिंस ये आपका बॉर्डर में रिपीटेड है तो सबको समझ में आ गया है, हाँ, तो सब आराम से कंप्लीट कर लेंगे। देखो इसके अपन 2 पार्ट करने वाले हैं। 2 पार्ट जी करेंगे, मतलब ऊपर नीचे का जो पार्ट है वो पानी का पार्ट रहेगा जी और ऊपर पेड़ दिखाएंगे अपन। इसके लिए अपन उसको जी। 2 पार्ट करके लेंगे। अच्छा, विप्रा एक बार आधा दोबारा। आधा करना है संजय बाबू? थोड़ा सा ऊपर लेंगे। मतलब पानी वाले को ज्यादा जगह देनी है? हाँ, ज्यादा जगह देनी। अच्छा, हल्का सा आप पेपर शिफ्ट करेंगे ना ऊपर तो अंदाजा लग जाएगा सबको कि ऊपर का पार्ट हाँ, छोटा है। हाँ, ओके। ये दिख गया। आप थोड़ा ऊपर खिसका दीजिए। ओके। विप्रा, मैं बताता हूँ, few आपका people are A4 साइज का अगर पेपर रहे ना, सुनो, हाँ एक A4 साइज का पेपर रहेगा तो हाँ। ऊपर से अपन को 12.5 सेंटीमीटर हम्म। लेने का है। नीचे जी। बचेगा 14.5। अच्छा, ऊपर 12.5 है, नीचे हाँ, 14.5 है, तो थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा छोटा है और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है। संजय बाबू, आप आगे बढ़ने के पहले ना एक बार पेपर उठा के पास से दिखा दीजिए, बॉर्डर की डिजाइन किसी किसी को देखनी है थोड़ा सा क्लोज से। ओके। हाँ, एक मिनट है। वो वाला पेपर जी जी दिखा दे जो अभी बनाया था। जी। ओके। We'll just show Nidhi. Just 1 second. थोड़ा राइट में कीजिए संजय बाबू। हाँ, अभी ठीक है। सो सी, दिस इज द बॉर्डर डिजाइन एवरीवन। इस तरीके से हमने बॉर्डर बनाई है। संजय बाबू, ये रख के और अब अपना ओरिजिनल पेपर उठा के भी एक बार दिखा दीजिए तो सबको एकदम क्लियर हो जाए। सी, थोड़ा सा राइट में कीजिए संजय बाबू। हाँ, बस। Okay, that's what we have done, that we have shown with pen also in the border area. Okay, ठीक है संजय बाबू। So again, quickly repeating how we have divided it in proportion. So the upper half should be slightly, it's not upper half, the upper part should be slightly smaller than the lower part. The upper part for Sanjay Bhau measures around 12.5 centimeters and the lower part measures around 14.5. So you can understand that the upper part and the lower part has a difference of 2 centimeters. तो आप अपने इसमें accordingly थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं। Okay. एंड डबल लाइन बनाई है जैसे कि संजय भाव ने बनाई है, इससे हम पानी दिखाना चाह रहे हैं। एंड वी हैव डन अ डबल लाइन एंड इनसाइड दैट वी आर फिलिंग। तो ये आप स्क्वायर बना रहे हैं क्या संजय भाव इसके अंदर? नहीं, ये पत्थर लगा रहे हैं अपन। अच्छा। देखो, कोई पहाड़ रहे या पानी रहे, नदी रहे, नाला रहे, तालाब रहे, समंदर रहे, इसका जी। पानी बाहर नहीं निकले, अपने हाथ से बाहर नहीं निकले, इससे पत्थर लगाते हैं। अच्छा, एक वो बार पत्थर पत्थर अपन भी यूज आप करते पास हैं। से दिखा दीजिएगा संजय भाव। हाँ, हाँ। We've given a closer look to the border, Gracie ji. Sanjay Bhau will be lifting his paper right now. You can have a look again if it is needed. The paper which he is using at the moment is a normal thick colored sheet, but we also do it on canvas. In our regular sessions, we use canvas for making our paintings. Since we have less time on this session, we have used a paper and it's a small size. Usually we work with bigger sizes in our regular sessions.
So as you can see, and we are starting to kind of observe that Warli will just use simple geometric figures to make the whole painting, and through that we kind of show a story. We try to show a story in Warli painting, and it is mostly based in the daily life of Warli people. You can see the closer look of the stones and see the border as well. Okay. So more like square and circle kind of structures. Exactly square या exactly circle नहीं है. थोड़े से stone जैसे दिखने चाहिए उस double line के बीच में. आज फास्ट है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया। जन्माष्टमी का, या हाँ हाँ. With कुछ this नहीं a खाता happy यार। Janmashtami to all of you as well. संजय भाव is telling कि उनका फास्ट है आज. आज मुझे लगता है संजय भाव काफी सारे लोगों का फास्ट होगा जन्माष्टमी का. बहुत सारे लोग मैं कल आज भी कुछ सेलिब्रेट कर खाता रहे नहीं हैं। ना, खाली पानी ओ और अच्छा. चाय। अच्छा. तो थोड़ा सा पसीना पसीना निकल गया। अच्छा. तो आज आपकी डबल मेहनत हो रही है. ये क्या बना रहे हैं? आई थिंक पेड़ बना रहे हैं संजय भाव. ये नारियल का पेड़ बना रहे हैं अपन। जी. सो निधि, आई रिमेम्बर जब संजय भाव ने शुरू किया था हमारे साथ में, तो इनिशियल सेशंस आई आल्सो अटेंडेड विद संजय भाव, एंड ही सो हार्ड वर्किंग. जब उनके घर पे अगर नेटवर्क नहीं आ रहा हो या कुछ लाइट चला गया हो, तो संजय भाव अपने घर के पास के शायद ट्रक में ना, संजय भाव ट्रक में जाके आप क्लासेस ले रहे थे उस वक्त. सो ही यूज्ड टू गो इनटू अ ट्रक एंड ही यूज्ड टू टेक क्लासेस फ्रॉम देयर, एंड वी वर जस्ट लाइक काइंड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम कि इतना मतलब प्रॉब्लम्स है नेटवर्क के, तब भी उनमें इतना सिखाने का जज्बा है कि वो जाके अपने घर के पास के ट्रक में बैठ के हमें सिखाते थे. In fact, all these activities उस कोविड के टाइम पे आई थिंक कोविड टाइम्स पे या उस एग्जैक्टली. समय it helped many people in getting this from stress relieved and coming out एब्सोल्युटली. from the difficult time. So I think that was one time when mostly people joined and they enjoyed also, because it या was a diversion from the daily डेली difficult रूटीन, या situations. Yeah. यस. एंड अभी संजय बाबू बता भी रहे थे कि उन्होंने उस समय ज्वाइन किया था, एंड मतलब तब से ही विद अस, सो इट्स मोर देन 2 years आई थिंक. या. एंड सच में वारली को वी हैव टेकन टू अ डिफरेंट लेवल, एंड यस. ही इज डूइंग डिफरेंट पेंटिंग्स एज वेल. मॉडर्न पेंटिंग्स भी करते हैं, ट्रेडिशनल भी करते हैं. सो it's fun, and it's a different kind of experience for everyone to join the sessions in the live as well. जो regular sessions या. हमारे होते हैं उस पे बहुत कुछ सीखने को और भी मिलता है. संजय भाव एक बार ये ट्री का जो आपने ट्रंक पे काम दिखाएंगे किया है ना, दिखाएंगे। वो पास से दिखा दीजिएगा. आई नो बाकी लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा टू मैच हिज स्पेस, बट यू कैन जस्ट सी हिम, एंड थोड़ा बहुत आप लोग जो कर पाए वो करिए. लेटर ऑन वी विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग, सो यू कैन कंप्लीट योर वर्क लेटर ऑन इफ यू विश, एंड या. जस्ट डू एट योर पेस. अपना पेंटिंग स्पॉइल मत करिएगा जल्दी करने के उसमें, एंड डू एट योर पेस. डू एट योर पेस. एंड अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारा काम वार्ली में, इस वाले पेंटिंग में काफी कुछ रिपीटेड वर्क भी है. तो आप थोड़ा करके अगर आप लैग भी कर रहे हैं तो यू कैन स्लोली डू इट. सो ट्राई एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट. डोंट ट्राई टू मैच हिज पेस. जस्ट स्लोली एंजॉय एंड डू इट एट योर ओन पेस. यू विल स्टिल हैव द रिकॉर्डिंग विथ यू, which you can access later. Of course, if you are facing any troubles understanding any part, we will help you with the explanation for that.
So we are making a central line for the leaves, and then we are making more lines. Just how the coconut tree is. But we'll give you a closer look in a bit. No, it's not compulsory to follow specific measurements, Rashmi. So if you are comfortable making it freehand without the need of measurement, that is the best thing to do. You just need to understand the proportions. So no measurements are not compulsory in this one. Just approximate proportions you can follow. यहाँ पर नारियल निकालना है. ठीक है संजय, वो एक बार पास से दिखाइएगा तो समझ में आएगा, अभी इतना क्लियर नहीं. हाँ, just see. So you have to add dots, basically like big little medium sized circles for the coconuts, and on the trunk you see there are double lines, and in between the double lines there are vertical lines. थोड़ा सा ऊपर कीजिए संजय भाऊ. हाँ, आगे की तरफ की, हाँ और आगे कीजिए. ट्रंक देखनी है हमको, ट्रंक को कैमरे पे लेकर रहिए, जो मेन तना है ना उसका पेड़ का. हाँ हाँ, बस बस बस. यू ऑल कैन हैव अ लुक. ओके ओके, ठीक है संजय भाऊ. So, Mrinali reference image in the group, but if you see, Sanjay Bhau is not exactly copying the reference image. He's adding his own artistic interpretation to it. But of course, you can refer to this one if you want. I'll just share that in the group. So I have shared it. You can check. So now it's like two trees in cross positions overlapping each other, and that's how we are making it. That was just a reference image. Sanjay Bhau is giving his own artistic interpretation to this. और तने में हम वैसा ही काम करेंगे ना लाइंस के साथ संजय भाऊ. हाँ, सेम सेम सेम. अच्छा, संजय भाऊ थोड़ा सा रुक जाते हैं हम यहाँ पे, ताकि सब लोग इतना कंप्लीट भी कर ले. और निधि, हाँ. मीनवाइल यू कैन टेक ओवर एट दिस पॉइंट. श्योर. सो जैसा कि हमने पहले ये बनाया है ट्री, वी विल बी मेकिंग अ सिमिलर टू ट्रीज व्हिच आर क्रॉसिंग ईच अदर. सो while we are waiting for others to complete, I would just like to take you through the Pitchwai upcoming workshops, because as I was telling you, we have an offer running with all the upcoming workshops for 3 days. So I would really like you all to go through the website with our different art forms which is coming up. So if you can see, Vipra, it's visible, right? Yes, yes, it's visible. Okay, so the first one is the contemporary style Ganesha. If you can see this beautiful painting of Ganesha, we are doing it on a canvas size of 12 by 24, and we are starting this from 22nd of August, and we will go up to 1st of September. It's a
2-week workshop. So Pichwai with Catterfly is from Monday to Thursday, 4 to 5 p.m. So this is a 2-week workshop. It will end on 1st of September. It will start from 22nd of August. Okay, after this we are doing this a different variation to Pichwai. It's a we are doing this Pichwai on wooden tray. Like you can see, we are making this beautiful Kamal Talai and lotus on. We'll be teaching to make this Kamal Talai and lotuses on a tray, which can be used later also for your daily household work. So it's a 1-week workshop. We'll start from 5th September and it will go up to 8th of September. Again, 4 to 5 p.m. will be the timings. Then we are doing this Srinathji Mukharvind with cows. As you can see, beautiful Srinathji Mukharvind, and it is all surrounded with faces of cows. So this is a 2-week workshop which we will pick up on the 12th of September, and it will go up to 22nd of September, 4 to 5 p.m. Then we will be doing this lotuses, peacocks, and temples. Very nice workshop to attend because it will be including all three basic themes of the workshop, basic themes of Pichwai. So Kamal Talai, peacocks, and lotus. These are the basic themes of Pichwai art form. So we'll be doing this in the last week of September, and from 26th to 30th September, 4 to 5 p.m. 1 week workshop. After this, we'll be doing this Pichwai, peacock, and circular canvas. Peacock is a very famous theme of Pichwai. So we will be making it on a round circular canvas, 1 week workshop from 3rd to 6th October. After this, we will be doing a little contemporary style of painting, Krishna with flute. So as you can see, this is a beautiful painting to be made, and we will be doing it on a 12 by 16 canvas. 2-week workshop, 10th to 20th October. So 4 to 5 p.m. again. After this, we will be doing this cows under the tree. As you can see, two cows like around a tree, and we'll be surrounded with a pond with lotuses and kabal talai. 2-week workshop from 24th October to 3rd November, again 4 to 5 p.m. Then we will be doing this elephant on circular canvas in the second week of November, 7 to 11 November. Then we will be doing this Krishna with cow. As you can see, the Krishna hand and a cow facing towards it. It has main motives of Kamal Talai and lotuses. Then we will be doing this contemporary Pichwai Charan Kamal. As you can see on a round circular canvas, we'll be making the Charan of Lord Krishna. And then we'll be doing the Srinathji and cows. As you can see, Srinathji along with cows. So this is in the first week of December. Likewise, we have made the calendar for all the art forms, and I will be sharing the link to see these workshops. And you can see, you can select, and if you register within 19 to 21st of August, you can avail 25% off on the individual workshop. So just go through it and contact me as soon as possible. I will share the payment link and the coupon, and then you can select your workshops and make the registrations for them. So thank you so much. We'll Thanks, continue Nidhi. now. Yeah. Thank you. ठीक है संजय भाऊ, आगे बढ़ते हैं. हम्म, Yes, of course, Sunita ji, you can share this offer to others, to whomsoever you want, your friends, your relatives. It will be great if more people get to know about this and join these workshops to support our native artists. So just to share, this offer was although only till Independence Day, but exclusive to this group, we have extended it for 3 more days so that everybody gets an opportunity to attend the live sessions by us. And how does these sessions work? So definitely you can share it with your family friends, but they will have to give your reference. Otherwise, they will not be able to avail the discount. संजय भाऊ, आगे बढ़ते हैं. हाँ ठीक है.
संजय भाऊ, कैमरे को थोड़ा सा आप नीचे कर पाएंगे क्या? नीचे। हम्म। हाँ बस, ठीक है, अब बेटर है। थोड़ा सा नीचे पेपर खींच लीजिए और। बस। हाँ हाँ, ठीक है। So continue making the leaves of the tree, and you have to do the same in the other tree as well. So just in case if you are done, you can go forward and do it in the tree besides as well. तो संजय भाऊ, वारली में और किस टाइप की पेंटिंग्स बनती है, आप सबको बताना चाहेंगे थोड़ा? मैम, मेरा क्या होता है मालूम है क्या? इधर हाँ। पेंटिंग करने लगा ना, बात नहीं कर सकता हूँ। पर बीच बीच में थोड़ा बताते जाइए, क्योंकि सबको हाँ सुनने हाँ। में भी इंटरेस्ट रहेगा। क्योंकि इसमें से ध्यान हट गया ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है। आप बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेके भी बता सकते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं संजय भाऊ? एक घोंसले बना रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप जो बना रहे हैं एटलीस्ट अभी के लिए वो हाँ एक्सप्लेन हाँ करते जाइए, और फिर बीच बीच हाँ। में ब्रेक लेके और चिड़िया। वारली के बारे में बताइए। हाँ, चिड़िया के घोंसले आपने देखा होगा, तो नारियल के पेड़ या पान के पेड़ आपने देखे हैं, तो उसके ऊपर ये लगे रहते हैं। अच्छा। इसका मुंह नीचे से रहता है और इधर उनके बच्चे रहते हैं। बारिश के टाइम पे ज्यादा रहता है ये। ओके। एक थोड़ा सा पास से दिखा दीजिएगा संजय भाऊ। So please take a close-up look here. ठीक है संजय भाऊ। So Mathili, those are birds' nest which is hanging from the leaves. ये हम और ट्री बना रहे हैं क्या संजय भाऊ? हाँ, एक लास्ट का ट्री बना हुआ है। ओके। ये अलग से रहेगा। बस तो नारियल का निकाला है ना। ओके।
क्योंकि जब अपन पानी का एरिया निकालते हैं तो उसके बाजू में अपन को पेड़ ही दिखाई देंगे, जी। क्योंकि उसकी मट्टी बह ना जाए इसके लिए वो पेड़ लगाए रहते हैं उसके ऊपर बाजू में। अच्छा। So in this trunk, if you see, just simply white has been filled, and now we are taking out more branches from this tree, and the trunk is straight as compared to the, unlike the other trees, the coconut trees that we have made. So this is other kind of tree that is usually made in Warli. So another style to learn here. And the trunk has been completely colored in white, and then there are branches and sub branches now, the smaller ones that Sanjay Bhau is making. ये अपन 3 नंबर का पत्ता बना रहे हैं वाली का। जी। सो संजय भाव, ये हम लोग वारली में हमेशा व्हाइट कलर से ही क्यों बनाते हैं? इसके पीछे कोई रीजन है? अलग अलग स्टेट का अलग अलग ट्रेडिशनल रहता है। अच्छा। ये जो है पहले जो बनाते थे हम्म। तो जो पत्थर पे रहता था वो हम्म। पत्थर से ही निकालते थे। जब पत्थर के ऊपर पत्थर घिस जाता है तो व्हाइट हाँ, तो कलर, वाइट, ब्लैक हाँ और हाँ। ब्लैक करके व्हाइट कलर आता था। हम्म। तो वो व्हाइट कलर लेके जब उन्होंने ये लगाया तो जो चावल है, हम्म। चावल पीसने के बाद उसका व्हाइट कलर आ जाता था। तो अच्छा वो दीवार पे वो चालू कर लगाना चालू कर दिया उन्होंने। अच्छा। अच्छा, तो उसी ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, वो उसी ट्रेडिशन में मेंटेन। जब दीवार पे गुफा में अगर करते थे तो वो ब्लैक होता था, लेकिन बाद में उन्होंने बंद कर दिया ब्लैक पे करने का। वो अपशकुन मानने लगे ब्लैक को। तो इसकी जी। वजह से ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, वो कौन सा भी बैकग्राउंड लेते हैं लेकिन ब्लैक नहीं लेते। अच्छा अच्छा। अच्छा। संजय बाबू, ये जो आप बर्ड बना रहे हैं वो एक बार पेपर पे दिखाइएगा। हाँ देखो, वार्ली में बर्ड तो दिखाते हैं लेकिन इनका स्टाइल जो है वो ही दिखाते हैं। अलग जी। अलग बर्ड के अलग अलग रूप नहीं दिखाते। जी। एक बर्ड है, उसके 3 स्टेप रहते हैं। जी। वो कौन से रहते हैं वो देखो। फर्स्ट स्टेप रहता है उड़ने वाला।
इस तरह से ये फील हो जाता है जैसे उसने हमने किया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है उतरने का। किसी पेड़ पे उतर रहा है या फिर जमीन पे उतर रहा है, उसकी पोजीशन इस तरह से रहती है। जी। देखो स्टेप बाय स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप अपना ये हो गया। फोर्थ स्टेप में अगर इसका जब उतर रहा है तो उसका पोजीशन इस तरह से रहता है, इस तरह से। जी। पंख अलग तरीके से हो जाते हैं। हाँ। और इसमें ये फील हो जाता है। और इसके पैर दिखते हैं, ये पैर इस तरह से होता है, जी। इस तरह उतरने का कोशिश कर रहा है। ओके। और थर्ड पोजीशन देखो, फर्स्ट में पैर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जी। पीछे रहता है। सेकंड में जी। पैर दिख रहा है, वो उतरने की कोशिश कर रहा है। संजय बाबू, आपका फोन आप म्यूट पे चले गए और आड़ा हो गया है, एक बार टर्न कर लीजिए। एक मिनट, जस्ट पोजीशन वन रहता है। सेकेंड। संजय बाबू, एक बार आड़ा कर लीजिए फोन। हाँ, अभी ठीक है। Yes, we'll share the bird drawing in the group, Shakuntala ji. और इसके पैर दिखेंगे, इस तरह से ये पैर रहेंगे और ये फिर जी। हो जाएगा। हम्म? देखो जी। इसमें इधर टर्न दिया है, इधर टर्न नहीं है, इधर जी। टर्न नहीं है। ओके, ये 3 स्टेप रहते हैं। अभी जो जी। हमने निकाला है वो उड़ रहा है। जी। So this one is a flying bird that we have added, everyone. बन जा लगा। We're making another bird. And Sanjay Babu has just very beautifully explained the 3 forms of bird: one which is flying, one which is trying to come down, and the other one which has come down on the ground and sitting. Right now, both these birds are in flying position. Only white paint is needed for the design. For the background color, you can use any color except for black. Black is not used in traditional Warli paintings. Apart from that, you can use any other darker color that you like. So this is again in flying position, just in opposite direction. Yes, you can get the colored sheet itself as well. So this one is towards the nest. We'll give you a closer look to this. संजय वो एक बार पास से दिखा दीजिएगा इसको. Just have a look.
तो संजय भाऊ ये जो है ये सेकंड पोजीशन का ही बर्ड आपने जैसा नीचे हाँ, आते वक्त का सेकंड बनाया पोजीशन वो का ही है। है। हाँ, हाँ। थर्ड पोजीशन का अपन इधर बनाएंगे। ओके। एक दो बनाएंगे थर्ड पोजीशन का, जी। बैठा हुआ है इधर इधर। थैंक यू सो मच गायत्री जी। So this is sitting position, sitting on the tree. एक बार पास से दिखा दीजिएगा संजय भाऊ। So check this। और एक बार वो वाला भी दिखा दीजिए जो नेस्ट के पास में है। हाँ ठीक है। ओके। इधर अपन सूरज निकालेंगे। जी। We'll just show you in a bit, Gracie ji. So we're making the sun, and the sun rays are shown in dots. Dots बना रहे हैं ना संजय भाऊ? हाँ, Okay. Thank you so much, Maithili. थैंक यू सो मच उषा जी। उषा जी बोल रही है संजय भाऊ कि अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्ड्स वाला भी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। Camera can't be placed much near because then he will have very less space to move his brush, Mrinalini. So that's why if you need at any point of time, you need any like a closer look or an explanation, we're happy to explain it on a bigger piece of paper so that you can understand it better. मैम लाइट गई। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या उससे? नहीं, अभी तक तो अभी तुरंत नहीं होगा। हाँ बस हमारे पास अभी ज्यादा टाइम वैसे भी नहीं आया आज का संजय भाऊ, हाँ, तो 7-8 मिनट बचे, उतना करके आज हम खत्म करेंगे। ये भी सिटिंग पोजीशन में है ना? हाँ। ओके। This one's in flying position, everyone. You can make multiple birds. So just in case आपके पास ज्यादा जगह है, if you have more space in the sky area, you can make more birds also. अब और ज्यादा birds भी बना सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, जैसे कुछ लेफ्ट साइड से आते हुए, कुछ राइट से आते हुए, कुछ नीचे की तरफ मुड़ते हुए, so that it gives a more natural effect to it.
Thank you so much, Manasa. संजय भाई ये वाला भी पास से दिखाइएगा. Okay, so again, this is the second position that we were talking about. It's just towards the nest. तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं. You can make it as per your own wish. Also, you just don't need to exactly do it the way Sanjay Bhau has done. But आप एक approximate वो देख लीजिए look कि इस तरीके का दिखना चाहिए. Okay? ठीक है संजय भाऊ. I have sent a close-up picture of the birds if you want to see in the group. You can refer to that for positioning the birds, especially the ones near the nest. देखो ये हमने क्या दिखाया है कि इधर से एक बच्चे ने मुंह निकाला है और इसको ये खिला रही है, दाना खिला रही है, ये दिखाया है. अच्छा अच्छा, एक थोड़ा सा फेस जैसा दिखाना है और फिर हाँ उसके हाँ, थ्रू उसको बर्ड मुंह देखा, दाना मतलब खिला क्या रही है. करने का है उसको. हाँ देखो ये हमने इधर हमें अगर ये दिखाया है, जी हाँ, जी. तो उसको एक पॉइंट देने का है और उससे थोड़ा सा बाहर निकलने का वी शेप है. जैसा बनाना है. हाँ, वी शेप, एक सर्कल हाँ देने का है और हाँ उसको वी शेप देने का है. जी देखो, हाँ. हम्म. जी. ठीक है संजय भाऊ. ओके. निधि, you want to Yeah. take over for a bit? Yeah, sure. So quickly, I'll not take much time because we are already running short of time. So because we have multiple art forms, so I would like to take you again through a different art style, Patachitra, and showcase what is coming up. Sorry, Kalighat, and I will showcase what is coming up in the workshops in Kalighat and Santhal. So the first, which is lined up, which is starting next week. Now, just to tell you, Kalighat we do on the weekends, Fridays and Saturdays. So this Ganesh Chaturthi special, which you can see, it will be from 26th August to 3rd September. 2 days like Friday and Saturday, both the days 4 to 6 p.m. Or and after this, we'll be doing this two parrots and fishes in Santhal. So this is a 1 week workshop. I mean, it is only for the weekend, Friday and Saturday, 4 to 6 p.m. Then we will be doing this plant trees save lives. As you can see, a beautiful painting, and we will be doing it over 2 weekends, 16th, 17th, and then 23rd and 24th September, Friday and Saturday, 4 to 6 p.m. After this, we are picking up this Ma Durga and Kalighat style. As I think most of you must be knowing, Kalighat is the art style which is coming from West Bengal region. And so doing Ma Durga Kalighat in that art style, like it's really it should be a must join workshop for everyone. And this is a simple art and it's a freehand drawing. So we will be doing it for the last week of September, 30th and 1st October, 4 to 6 p.m. Friday and Saturday. So after this, we'll be doing this Babu embracing BB. This is a very common theme and motif in Pichwai. So Kalighat is famous for their Babu and BB themes. So we'll be doing it over the 2 weekends, 7th, 8th October, and then 14th and 15th October. Then we will be doing this goddess Lakshmi in Kalighat style. As you can see, goddess Lakshmi. So we are doing this on the occasion of Diwali, and it is again spread in only 1 week, only I mean 2 days, 4 to 6 p.m. each day, 21st and 22nd October. Then we will be doing this wedding celebration in Santhal. Santhal is a tribe from West Bengal. So we'll be picking this up and we'll be making this painting. This is again a 2 day workshop, 28th and 29th October.
Then we will be doing this tree goddess. As you can see, a tree depicting as a goddess, and we'll be taking up this workshop. This is spread over 3 weeks, I mean 3 weekends, Friday and Saturday, 4th November to 19th November. After this, we will be doing this beautiful painting of Radha and Krishna, as you can see. So this is one, 2-day workshop, 25th and 26th November. Then we will be doing the Santhal on kettle. So these are the workshops which are like lined up for the coming Kalighat workshop. And I would really request all of you to go through it. I will share the link also, and all these workshops will be on 25% off for the coming 3 days. So thank you, everyone. Thanks, Nidhi. So we are done for today, and we'll share the recording and the picture on Classroom. We'll give access to Classroom to everyone. So please follow the group and don't add your images at this moment on the group. We'll be shortly sharing how you would access the Classroom as well. So at this point, we will wrap up the session, and I think Nidhi Sanjay Bhau is already disconnected. So we'll see you all tomorrow at the same time, everyone, and we'll continue from here. So I hope you enjoyed today's session, and we'll see you all tomorrow at the same time. So thank you so much for joining, everyone. Take care. Thanks, everyone. Thanks, Nidhi.